लेट्स डिस्कस। सो पहली बात है, इसमें जो की कंसेप्ट है दैट इज टू realize there are two ways to realize this fact that क्यों हम इसको x सिंपली पुट कर सकते हैं। तो नंबर वन इज लिबनिट्स रूल, राइट? लिबनिट्स रूल, हमें लिबनिट्स रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करना है। उससे क्या आ जाएगा? तो नंबर वन को अगर हम यूज करते हैं, बहुत सारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये सिंपली आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और इस साइड आ जाएगा वाई ऑफ एक्स, करेक्ट? नाउ इसमें ये जो आया मेरे पास, आई कैन सिंपली राइट इट एज दिस 1 माइनस वाई प्राइम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। रीअरेंज इट लाइक दिस, वाई प्राइम का एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर जिसका रूट, and then simply write like this y prime of x by root over 1 minus y square of x equals to 1. both side dx multiply कर दो and then integrate कर दो। यहाँ तक सबका हुआ? नहीं हुआ तो बस इसको एक बार फॉलो करो, और किसी को डाउट हो तो चैट में लिखो, then we'll proceed to the last part. I think no one has a doubt here, right? ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? राइट हैंड साइड तो ऑब्वियसली x प्लस सी आएगा, राइट? अब इसको कैसे करेंगे? सिंपली y ऑफ x को t मान लो, राइट? देन क्या होगा? y डैश ऑफ x क्या बनेगा? y डैश ऑफ x dx should be dt, correct? And then this one would be simply dt by root over 1 minus t square, जो बन जाता है क्या? x plus c। इसका आंसर आ जाएगा sin इनवर्स t, और t का मतलब यू ऑलरेडी नो इट्स y, तो sin इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x plus c। यूज द इनिशियल कंडीशन कि y ऑफ 0 0 होता है, x में 0 बटाओ, y में 0 बटाओ, तो 0 इक्वल्स टू 0 plus c, which means c is 0, right? Therefore y is equals to sin x, और y अगर sin x है तो y डबल प्राइम क्या होगा? माइनस sin x। Therefore does not matter, so y plus y double prime plus 1 is equals to 1, so the answer is 1. So I think Kshitij gave the correct answer, I think. So yeah, well done, I think all of you. तो कोई डाउट यहाँ पे, लाइक गलती कहाँ पे हुआ था? I don't see a place where you can get stuck if you... अच्छा, Shwaralpi, you said you already got y equals to sin x, right? Then you should already get the answer 1, right? Where did you get stuck after this? If there are no doubts about this, please write that you have no doubt, so that we will go to the next one. Otherwise it's hard to understand कि doubt है कि नहीं किसी में, right? लिबनिट्स रूल, राइट? तो देखो अच्छे से समझना, ठीक है? क्या होता है, मैं जनरल बताता हूँ। नीचे मान लो एक लिमिट है a ऑफ x करके, ऊपर का लिमिट है मान लो b ऑफ x करके, जहाँ पे a ऑफ x और b ऑफ x दोनों x के कोई भी फंक्शन है, और तुम्हारा इंटीग्रल मान लो एफ टी डी टी है, ठीक है? और तुम्हें मैंने कहा है कि इसको डिफरेंशिएट करो, राइट? तो क्या होगा? डी डी एक्स ऑफ एक इंटीग्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स हैं, लिमिट्स हैं, उसमें वेरिएबल लिमिट्स हैं x के ही। इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है, पहले आप ऊपर वाले लिमिट को डिफरेंशिएट करो, दैट इज b प्राइम ऑफ x, इसके साथ मल्टीप्लाई करो f ऑफ b ऑफ x, मतलब जो भी अंदर इंटीग्रेंड है उसमें जो भी इंटीग्रल का वेरिएबल है उसके जगह पे, हर जगह पे b ऑफ x को पुट कर दो, माइनस सेम चीज करो नीचे वाले के साथ, पहले लिमिट का डिफरेंशिएशन एंड देन अंदर f ऑफ a ऑफ x, ठीक है? दिस इज गोइंग टू बी योर लिबनिट्स रूल। तो हमने क्या किया था हमारे वाले क्वेश्चन में, इफ आई टेक माय क्वेश्चन, इट वाज 0 to x, राइट? मान लो y t dt राइट हैंड साइड था मेरे पास, करेक्ट? अब 0 to dt y t dt, अगर 0 to x y t dt है, और अगर आप बोथ साइड इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आएगा? पहले x का डिफरेंशिएशन विच इज 1, राइट, इनटू y ऑफ x, माइनस फिर 0 का डिफरेंशिएशन जो क्या होता है? 0 ही होता है, इनटू y ऑफ 0, तो कैंसिल होकर y ऑफ x नहीं आ गया, राइट? तो कोई कांस्टेंट अगर रहे तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, वो वाला लिमिट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग। इज द लिमिट्स रूल क्लियर टू यू? सो व्हाट से, लेट्स डू इट। दिस क्वेश्चंस आर इजी, ओके? सो डू नॉट ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लेक्स। सो मुझे क्या दिखता है, जैसे मैं ये क्वेश्चन देखता हूँ, माय फर्स्ट इंट्यूशन इज व्हाट?
एफ ऑफ कैपिटल एफ में एक्स स्क्वायर है और मेरे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स का एक और डेफिनेशन भी है, तो आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू इक्वेट देम, राइट। तो पहले वाले में आप एक्स की जगह एक्स स्क्वायर बैठाओ, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 से एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा टी एफ टी डी टी, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5, करेक्ट। अब ये जो है इस पे बोथ साइड डिफरेंशिएशन करो, करेक्ट। करोगे तो क्या आएगा, तो 1 सेकेंड, या लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मल्टीप्लाइड बाई इस टोटल जगह पे, हर जगह टी पे जहाँ पे भी टी है इसका जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टेप्स को आप ध्यान से करोगे ना तो कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होगा। मुझे पता है कि हर टी को एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करना है जो भी लिमिट है, और नीचे का लिमिट 0 है, सो माइनस वाला टर्म नहीं आएगा, राइट। इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब प्लस 5x4। अब एक्स क्यूब बोथ साइड से कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 2 टाइम्स स्मॉल ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5x। देयरफॉर एफ ऑफ कैपिटल एक्स स्क्वायर is equals to 4/2 which is 2 plus 5/2x। मुझे क्या निकालना है, r equals to 1 to 12। therefore summation r equals to 1 to 12 small f of r square, right। क्या होगा, summation r equals to 1 to 12 small f of r square का वैल्यू पुट कर देते हैं 2 plus 5/2r। तो पहला वाला बन गया 2 into 12 24, दूसरा वाला बन गया 5/2 इंटू समेशन आर इक्वल्स टू 1 to 12 आर। समेशन है इसलिए दोनों टर्म्स पे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स प्लस और माइनस से रिलेटेड हैं, तो ये समेशन दोनों टर्म्स पे अलग अलग आ जाएगा। तो 2 के ऊपर समेशन करोगे आप 12 टाइम्स, तो और तो कोई आर वेरिएबल नहीं है, सो 2 into 12 हो जाएगा, तो 2 ही 12 टाइम्स सम हो रहा है। और इस पे आप करोगे तो 5/2 हर जगह पे कांस्टेंट है, तो वो हमने कॉमन ले लिया है और मल्टीप्लाइड बाई ये समेशन है, राइट। आर इक्वल्स टू 1 to 12 सिंपली आर का। इसका आंसर क्या होगा, 1 + 2 + 3 ऑल द वे अप टू 12, राइट। इसका आंसर क्या होता है 12 into 13/2, सो 24 + 5/2 इंटू 12 into 13/2, 2 ये 3 बन गया, एंड 15 into 13 which is 14 square minus 1 which is 195। therefore the answer is 219, and yes, surely his answer was correct। okay, nice। yeah, so now डाउट्स, क्वेरीज, कोई थियोरी पार्ट कुछ समझ में नहीं आया बताओ, चैट में लिखो एक एक करके, और किसी को कुछ बोलना है तो देन रेज योर हैंड प्लीज। कुछ भी अगर वर्बली बोलना है, इफ इट्स नॉट गोइंग टू फिट इन द चैट देन डू रेज योर हैंड, दैट इज द ओनली वे यू कैन स्पीक ऑब्वियसली हियर। क्लियर, ओके। एंड अदर्स जो भी आप हो, आप लोग भी बताओ कि क्लियर है कि नहीं। अंडरस्टूड, नाइस। You actually substituted x in place of x square. Okay, you substituted it. Okay. No, that works too, right? That also works. f of x square की जगह वो आप कर सकते हो. Same thing. No worries. You can do that as well. Great. Okay. सबका clear है ना? Everyone. All good. चलो. Okay. See. क्वेश्चन में क्या होगा, इसमें हमें क्या करना है, पहली बात है ऑब्वियसली इसको आप आई मान लो, राइट। तो ये अगर आई है और अगर हम किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, तो किंग्स प्रॉपर्टी के कारण क्या होगा, सो जितने भी एक्स हैं मेरे पास वो बन जाएंगे -x, करेक्ट। ये बन जाएगा e टू द पावर -sin x, क्योंकि साइन ऑफ -x है, और ये बन जाएगा 1 प्लस sin टू द पावर 4x ही, क्योंकि साइन ऑफ -x sin x होता है जिसका पावर 4 इज अगेन पॉजिटिव। और ये अल्टीमेटली मेरे पास क्या बनेगा, -π/2 से +π/2। ये आप एलसीएम कर लो इसका, 1 + 1/e टू द पावर sin x लिख के, ये बन जाएगा e टू द पावर sin x by 1 + e टू द पावर sin x 4 into 8√2 का cos x डिवाइडेड बाई 1 + sin टू द पावर 4x dx, ठीक है। अब ये जो पहला है और ये जो लास्ट कॉपी है, इन दोनों को ऐड करो, क्या बनेगा 2i, और ये e टू द पावर 1/e टू द पावर 1 + e टू द पावर sin x कॉमन चला जाएगा, एंड एज यू कैन सी ये टोटल चीज कट ऑफ हो जाएगी।
आपके पास जो बचेगा वो बचेगा ये -π/2 से +π/2 8√2 cos x by 1 plus sin to the power 4x dx. ठीक है. Since it's an even function, you can still write it as 0 से लेके 0 to π/2 8√2 cos x by 1 plus sin to the power 4x dx. इतना क्लियर है सबको? होपफुली इतना सबको होपफुली क्लियर है. अगर क्लियर नहीं है तो लेट मी नो इन चैट वंस so that okay, clear है, right? Okay. So 2i equals to this, so 2 will get cancelled and therefore i का वैल्यू क्या है मेरे पास 0 to π/2 बाहर 8√2 ये बन जाएगा cos x dx by 1 plus sin to the power 4 dx. अब यहाँ पे sin x is screaming to be substituted, which means t is equal to sin x and dt equals to cos x dx हमें करना ही है. And this will transform our required integral into 8√2 into 0 to 1 कितना dt by 1 plus t to the power 4. Now, in a very recent video on YouTube, I think the last video, I had discussed कि जब भी नीचे power 4 का polynomial है और इस तरीके के terms है, there is a technique we should use, right? Technique क्या है? तो at least in this case आपको क्या करना है? आपको 0 to 1 लिखना है और ऊपर जो values हैं 1 उसको रिप्रेजेंट करना है एज समथिंग्स विच वुड वर्क. तो पहले क्या करो आप इसको लिख दो 1 plus t square plus 1 minus t square जो कि होता है 2 और वो 2 नीचे भी मल्टीप्लाई आप कर दो. Why are we doing this? You will know in a second. ठीक है. अब इसमें अगर हम y2 को यहाँ पे लिखते हैं तो ये बन जाएगा 4√2 और पहला इंटीग्रल मेरा बन जाएगा 1 plus t square by 1 plus t की पावर 4 dt और जो दूसरा इंटीग्रल है वो बन जाएगा 0 to 1 1 minus t square by 1 plus t की पावर 4 dt. करेक्ट. अब ये जो है यहाँ पे हमें क्या करना है 4√2 ऊपर और नीचे आप t square से डिवाइड कर दो. सो इफ यू डिवाइड बाय t square it simply becomes 1 by 1 plus t square by t square plus 1 by t square dt and this would become 0 to 1 1 by t square minus 1 by 1 plus t to the power 4 dt. Okay. Now, this would therefore be, मैं लिखता हूँ एक सेपरेट जगह पे I is equals to 4√2. अब जो पहला इंटीग्रल है इसको आप ऐसे लिखो. तो मैं दो अलग इंटीग्रल्स यहाँ पे लिख देता हूँ. पहले इंटीग्रल को आप लिखो 1 plus 1 by t square dt डिवाइडेड बाई इसको आप लिख दो t minus 1 by t का होल स्क्वायर प्लस 2. करेक्ट. जो दूसरा इंटीग्रल है उसको आप लिखो -4√2 0 to 1 1 minus 1 by t square dt नीचे वाले को आप लिख दो t plus 1 by t का होल स्क्वायर माइनस 2. ओके. यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए आई थिंक कि हमने टी स्क्वायर से डिवाइड किया एंड देन हमने सिंपली a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab और a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगाया है. बाय द वे ये होगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे एक टाइप था. ओके. नाउ इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें u सब्स्टिट्यूट करना है फॉर t माइनस 1 बाई टी और इसमें हमें v सब्स्टिट्यूट करना है फॉर t प्लस 1 बाई टी. ओके. लेट अस डू दैट. 4√2 कॉमन. व्हेन आई सब्स्टिट्यूट u हियर और यू कैन सिंपली राइट डाउन डायरेक्टली द एंटाई डेरिवेटिव. ये u स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा 1 बाई √2 tan इनवर्स ऑफ t माइनस 1 बाई टी बाई √2. दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम 1 to 0 और अगला वाला आपका बन जाएगा 4√2 इंटू आई थिंक 1 बाई 2√2 ln ऑफ t प्लस 1 बाई टी माइनस √2 बाई t प्लस 1 बाई टी प्लस √2 and this is also going to be from 1 to 0. Correct. And ultimately when you solve this whole thing आपके पास ultimately जो आएगा वो ऐसा दिखेगा. that would be 2 pi plus 2 whole into ln of 3 plus 2√2. Okay. Therefore, alpha is 2, beta is 2. Alpha square plus beta square is 8, which is the correct answer. So, any doubts in this whole process?
देख लो आप अच्छे से एक बार, and we'll give you some time to see the solution. Sir, sir, Yes, am I audible? is you're audible. Sir, actually, I was thinking of a bit different approach. Can I like share it? Like, I don't know whether it is correct or not. I just wanted to share it. Okay, give me a second. Yes, tell me, I Sir, can write it down. uh, yes, sir. Sir, over here, can we take 1 plus sin e to the power sin x is equal to t, and So then in the original question you are saying, right? uh, Directly. yes, sir. Like, if we take 1 Hmm. plus e, like we are substituting, let's say we substitute 1 plus e to the power sin x is equal to t, Mm-hmm. then we get e sine to the power x is equal to t minus 1. Yes. After that, if we take log both the side, Okay. we will be getting sin x is equal to ln t minus 1. Okay. Mm-hmm. Now over here, the first expression where we substitute 1 plus e to the power sin x is equal to t, I want to convert the entire expression into t, so I will be differentiating with respect to t, so I will be getting an expression like e to the power sin x cos x dx is equal to dt. Mm-hmm. Here, like we can kind of divide e to the power sin x in the denominator part, Mm-hmm. so I so the final expression that will be derived is dt divided by t into t minus 1, 1 plus ln t minus 1. You're not audible in the last part. Your voice is breaking Okay. a little bit. Okay, I'll do the final expression for you. I just have to see. So I think it is simply okay. Let's do this. Let's do the limits first. So limits होने वाले हैं -5/2, right? E to the power -1 and 1 plus e. This is going to be the limits. 8 root 2. Cos x is going to be root over 1 minus ln square of t minus 1. No, sir, no, sir. We can differentiate 1 plus e to the power sin x by t. So we will be getting cos x there itself. Yes, yes. So I will cancel it off. Oh, okay. Worries. I mean, it will get cancelled eventually, right? If it already comes there. Okay, 1 plus sine to the power 4x is simply this. I mean, if it comes, it will get cancelled. No worries about that. Into t. And now the dx part. Okay. So x is basically sine inverse of ln of t minus 1. Let's do this. Dx then should be root over of 1 minus ln square of t minus 1. As you said, it will get cancelled off. And then you have another t minus 1, I think. Yes, I think that is going to be the dx. So basically, this is going to be here, and there is a dt here. Yes, So sir. ultimately, the expression becomes, according to you, 1 plus e inverse, 1 plus e, 8 root 2. This is cancelled, and we have 8 root 2 dt divided by t into t minus 1 into 1 plus ln to the power 4 t minus 1. Yes. But what about it now? Sir, like we can kind of further simplify it. I'm stuck over here itself. Okay. So yeah. So it gave you something, but I right now I don't have any idea how to simplify it further. I would start off with substituting t minus 1 as u first of all because I don't like this. But even so, if you do u equals to t minus 1, this would be simply e inverse to e, 8 root 2 du, and t would be u plus 1, t minus would be u. So it's basically u into u plus 1 into 1 plus ln to the power 4u. Right? And it also screams you to substitute ln u again, right? Which gives you -1 to +1 after substituting. So we can also use series expansion over here. Series expansion of what? 1 by u plus 1? No, sir, of ln u. But yeah, that is going to be in the denominator. You will have an infinite series in the denominator then, Oh, yes. right? How would you manage that thing?
So yeah, your method then ln of u would be z, and if you do that, you would get du by u is dz, right? Yes, The sir. limits would be -1 to 1, and I would simply have 8 root 2 dz by u is e to the power z, e to the power z plus 1 into 1 plus z to the power 4. Do you see it has converted into the same expression where if you apply King's rule again, Oh, yes. if you apply King's rule again, it will simply become again e to the power minus z, and then it will go up, and then you add, and then you get the same form. So ultimately, one way or another, we are going to reach this form. Yes. So any progress? Anyone? I want to end the session in like 2-3 minutes, so that's why I'm not trying to give you more time for this one. So today I have some work after 11, so maybe tomorrow we can let me know actually in the chat after the session is over, anytime before tomorrow's sessions, if you want to do the session earlier. 10 sometimes is too late, so if you could do it from 9:30 or 9:45, we could get 15 minutes extra. So let me know if you would like that, if you could manage to come a little bit early. Tomorrow we can discuss some mixed questions, not from integration itself, like differential equations. As Kshitij also said, a few probability problems. That's okay as well. Maybe some algebra problems. We can discuss a few. So, okay, so no, anytime does not work, Alice. So that is why I'm asking you. So do one thing. You guys write down in the chat after the session is over if 9 is okay for you. So I will schedule the class according to my preference after 9. I would try to make it earlier. Okay. Are you sure? Sir, over here, like, can we do this thing? Like, if we add sorry, I1 plus I2, Hmm. and then if we take I1 minus I2, Hmm. and by using componendo and dividendo, uh, Hmm. can we do it? I1 plus I2 and I1 minus I2. Yes, if so you need to have a value as well, right? For I1 plus I2 and I1 minus I2. Yes, sir. That I'm not actually getting. Like, I'm thinking of componendo and dividendo, the same Yes. thing is coming. So you are saying this, I understand. You are saying basically ki, chalo, if I have this equals to some number k, which I wish I had known, then I1 by I2 would simply be that wishful number like this. This is going to be your answer, right? Yes, sir. Yes, but the problem again lies here. What is this thing? Yes, sir. That's the thing. So when I said that if this question had come to me at any point, I would never bother even calculating A and B. That is the trick part here. See, these two integrals should immediately tell you that it is going to be some sort of a King's rule type of integral. Okay, and this would mean that a plus b. So I should be able to apply King's rule here. I should be, because I understand the pattern. Why? Because let me do it here. You see, 4x minus x squared is nothing but x whole into 4 minus x, correct? Which is present both of it. Which means if the limits were something like this, with a plus b equals to 4, which is the point of the question, then let me show it here. So I1 is a to b x into sine of x whole into 4 minus x, correct? Dx. Therefore, if a plus b is equals to 4, okay, if a plus b were equal to 4, which it is obviously, then applying King's rule, every x will become simply a plus b minus x, and here it will x will become a plus b minus x, and then this x will also become a plus b minus x, correct? Now if I have a plus b equals to 4, that is the only thing that makes sense, because 4 minus x, this will become there is a sign, by the way, sign is there.
sine of this becomes 4 minus x, and this becomes again x. Why? Because this is again 4 minus x. 4 minus of 4 minus x is simply x. And now if you divide it into two parts, this integral, it will simply become a to b. This 4 will be there. So 4 times a to b sine of 4 minus x into x. Correct? Dx. And then the x part, that is minus a to b x into sine of x whole into 4 minus x dx. And you already see this is again I1. Therefore, 2I1 is equals to 4 times, this is I2, right? 4I2. So, therefore, I1 is equals to 2I2. And I think 36 I1 by I2 is equals to 72. Right? Right. So this is how the questions are made. Once you do enough questions, you completely understand this is what it has to be. A comma B is the orthocenter. It does not matter. This is irrelevant. For this question to work, there is no way you can calculate the answer, right? You already know that this integral is not solvable, which means for this question to work, King's rule has to be working, because you see there is x here, and in King's rule what happens usually in the original integral there is an extra polynomial term or something like that, which vanishes after you use the King's rule, which is this integral right here. And you see the transformation 4x minus x square is x whole into 4 minus x, which means if x were changed to be 4 minus x, if you make the transformation x to 4 minus x, this quantity remains unchanged, which hence you this is a King's rule problem. Okay. Yes, sure. Hello. Yes, sir. Sir, I also had another idea. Like, we could have just seen the question and we could have solved the thing very easily. Sir, can you please scroll up a bit? Mm-hmm. Like, if we use a little bit of, like, see the question, it is given 36 into I1 plus I2. Now, here, 72 Mm-hmm. is the only multiple of 36 out of all the Mm. options. So, we could have easily chosen 72. Yes, but then you are assuming I1 by I2 is an integer. Yeah, it's an integer. It should be an integer. Yes, but why is that? Why can't I1 be 4 by 3 and I2 be 5 by 4? Okay. Like, again, there is a sign involved. I mean, although if you still had like only polynomial terms, maybe it was feasible. But for sign terms, you already know sign already. Like, if I'm only going with intuition, sign terms always end in fractions. Yes. Sign is never an integer except for 1. And we can see this is not maybe not going to be 1 after all. So even if we get the answers, it seems like the answer could be fraction. So we are assuming I1 by I2 is a integer, but then again, usually this is going to be your dead end. So this is going to be your choice at the last minute if you have not solved the question. Since it's a multiple of 36 and you are expecting that they are modest enough to give it this value as an integer, which they usually do. So I would say this is a very educated guess. If you are at the very last minute of the exam, you should guess that. Yes, a very good Tukka strategy, I would say. That you let's say you have 1 minute left, you can't do this integral, you don't figure it out, you just have to take it. So you would obviously take the one that is a multiple of it, 72. Now, if you have time, you should always verify because it may not always work, right? And taking risk is not what we are going to do. Okay. So yeah, we'll meet tomorrow. So do practice questions, keep practicing, and in the sessions we will also practice a lot of questions. This are going to be enough. Okay, we'll practice each and every type of question from all the topics. Maybe that is going to be more than enough for you to get a very good score. Okay. Yeah. Yeah. Okay, Shadish. Okay, everyone. Bye. uh, we'll meet tomorrow.